Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे देखिबा अबाउट द बीटा स्पेक्ट्रम एंड पाउलिस प्रेडिक्शन ऑफ योर न्यूट्रिनो। देखो जो आमे देखुचु एनर्जी स्पेक्ट्रम को जदि आसीबा ऑफ योर बीटा पार्टिकल्स देन इट हैज बीन स्टडीड बाय मेनी साइंटिस्ट यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ए जो बीटा स्पेक्ट्रम रे गोटे जिनस देखा गला जे कंटिन्यूअस एनर्जी तुमरा एठी रेंज करूची अप टू 0 टू ए सर्टेन मैक्सिमम वेल डिफाइंड वैल्यू एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम लिमिट याकू कहा जाए एंड पॉइंट एनर्जी एज सोन इन फिगर। सो फिगर रे देखो एठी तुमरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्स एक्सिस रे निया जाइछि आउ द रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वाई एक्सिस रे निया जाइछि सो दैट यू आर गेटिंग ए पिक लाइक दिस। ओके, सो मैक्सिमम एनर्जी को आमे कहूछु कोन ना एंड पॉइंट एनर्जी। ए जो एंड पॉइंट एनर्जी इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर बीटा एमिटर हैला। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैज ए वेल डिफाइंड पिक जेमती एटा पिकटा आछि एटा वेरी वेल डिफाइंड एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस emitting your beta particles. Okay, so definition ame कहि परिबा जे end point energy is the maximum energy with which beta particles is emitted from the radioactive substance. Okay, now in addition to the continuous primary spectrum sometimes sharp lines are also observed. जो ए sharp lines गुड़ा जो आसिला in the beta spectrum with discrete energies hela, these are due to the electrons ejected from various orbits which are k l m cells of the atom co-phenomenon due to the phenomena of your interval conversion hela. Now ei jo explanation of your existence of continuous energy spectrum of beta particles with endpoint energy it has some difficulty hela, kichita difficulty kono it seems to contradict some of the laws of your conservation of energy and momentum. So let us see ei jo controversy ba contradiction kono kono आछि। So first ame energy conservation को जदि आसीबा देखो energy calculation ये शो करूची जे गोटे जदि न्यूक्लियस अछि तारो एनर्जी हैला जे कि एमिट करची बीटा पार्टिकल्स it decreases by an amount equal to end point energy काहे कि because end point energy होची तमरो maximum energy okay of the continuous spectrum but देखा गला कोन most of the beta particles emitted have energy which are much smaller than the end point energy so it is a violation of your law of conservation of energy. Okay, secondly आमे जदि law of conservation of linear moment को देखिबा ताले एथिरे भी किछटा प्रॉब्लम अछि हैला। it seems to hold good for a single particle of beta plus or beta minus emission हैला। देखो आमे जदि parent nucleus को कहिबा जे ये रेस्ट रे अछि हैला and it is decaying into two particles obviously गोटे हैला तमरो डॉटर न्यूक्लियस आ गोटे हैला इलेक्ट्रॉन बा बीटा पार्टिकल then according to law of conservation of linear momentum हेबा कथा कोन डॉटर न्यूक्लियस आउ emitted beta particle they must move along a same straight line with opposite direction and equal momenta किंतु एमती एक्चुअली देखा जाए नहीं. Okay, so this is also a violation of your law of conservation of linear momentum. एबे थर्ड जिनसो को आसीबा law of conservation of angular momentum आमे याकू स्पिन रे केमती तारो violation हस्ची देखिबा हैला. It has also some problem in your
बीटा डीके देख अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस कहूची जदि गोटे न्यूक्लियस अच्छी तार मास नंबर होची इवन मास नंबर माने ए हैला ताले इट हैज a spin either 0 or integral हैला so the nuclides with odd mass number जार odd mass number अच्छी the number have a half integral spin ओके यार हाफ इंटीग्राल स्पिन रहिबो अच्छा आमे जानिचु इलेक्ट्रॉन रो स्पिन होची हाफ h क्रॉस अच्छा as the number of nucleons in case of your beta decay remains same ताले कोन पेरेंट आ डॉटर न्यूक्लियस रो तमर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस सेम रहिबो हैला सो एबे प्रश्न आसिला हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ न्यूक्लियस having suppose even mass number and also integral spin to emit an electron of spin half h cross and thereafter it will give rise to a daughter nucleus having same mass number half h cross पुणी आसिलानी पुणी same mass number गोटे पुणी daughter nucleus बाहरुची हैला सो daughter nucleus यदि same mass number रहिला माने तार कोन integral spin रहिबो सो इट इज also a violation हैला जदि आमे एटा इवन न करी कि ऑड रे देखिबा सेम डिफिकल्टी इन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए ऑड मास number nuclide also was observed okay so this is a violation of your law of conservation of your angular momentum तेणु आमे तीनिटा भायोलेसन देखिला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिनियर मोमेंटम आउ एंगुलर मोमेंटम ए तीनटा जाकर भायोलेसन होउची सो यार पुनी एक्सप्लेनेशन केमती करा जिवो in order to explain these anomalies Pauli in 1930 suggested that another neutral particle with zero or negligible mass हैला as compared to your electron is also emitted along with the emission of your beta particle हैला जोथिरे हमें देखुतला जे बीटा पार्टिकल जेमती इलेक्ट्रॉन सह गोटे एंटी न्यूट्रिनो बाहरिबो और पॉजिट्रॉन सह गोटे न्यूट्रिनो बाहरिबो हैला एई जिंसटा को एक्सप्लेन करथिले किए ना पाउली हैला दिस पार्टिकल इज नोन एज न्यूट्रिनो हैला so the neutrino is assumed to have a spin angular momentum equal to half h cross okay and it is moving with a velocity of light c having antiparticle यार antiparticle को कहा जाए anti neutrino okay so the total energy of the beta particle and neutrino becomes constant and equal to your endpoint energy so according to the neutrino hypothesis a low energy beta particle is accompanied by a high energy neutrino and vice versa जदि बीटा पार्टिकल टा हाई एनर्जी ताले न्यूट्रिनो हो जिवो लो एनर्जी तेणु एई हिसाब रे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को साबित करि पारला एंड इट ओबेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द बीटा डीके अच्छा एबे देखिबा पुनी लिनियर मोमेंटम को जिबा देखो considering the conservation of linear momentum since these particles माने तमरो डॉटर न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल आउ सपोज एंटी न्यूट्रिनो हैला द वेक्टर सम जदि हमें करबा यार लिनियर मोमेंटम को हैला वेक्टर सम ऑफ द लिनियर मोमेंटम ऑफ दीज पार्टिकल्स मस्ट बी 0 काहे कि बिकॉज़ पेरेंट न्यूक्लियस हमरो रेस्ट रे अछि सो इन अदर वर्ड्स द लिनियर मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो must be represented by three sides of a triangle simply हैला which are taken in order हैला गोटे सीधा ऑर्डर रे से ट्रायंगल रो वेक्टर ताकू निया जाइथिबो and it is not necessary that beta particle and daughter nuclei should move in opposite direction हैला जोटा कि हमरो वायोलेशन देखौतिला opposite direction रे मूव हेबा कथा ही कहौतिला जोटा हैला along the same straight line after beta decay okay so there can be number of ways in which you can have separate momenta vector and they can be arranged to give a zero resultant तेणु करी linear momentum conservation भी hold करिगला लास्ट रे बे 3 नंबर केस रे हमें जदी law of conservation of angular momentum को जिबा then it can also be achieved केमिति देखो हमें ऑलरेडी स्पिन एंगुलर मोमेंटम न्यूट्रिनो रो नै जैचू हाफ h क्रॉस हैला
इलेक्ट्रॉन रो पुणी अछि हाफ एच क्रॉस तेणु ए दुटा मिसिकी कोन हबो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस हे गला thus the spin angular momentum of daughter nucleus will be equal or differ by an integer from the spin angular momentum of your parent nucleus जो relation टा की मध्य साबित हे गला hence the requirement of your law of conservation of angular momentum is also satisfied. Okay, thank you.